All right. So if you talk about lateral directional characteristics equation, so the same, just in short, right? I need to write a lambda 4, b lambda 3, c lambda square, d lambda plus e. Okay. So the roots for this particular, the roots we have to take, the roots, the roots will be such that the roots will be such that the airplane response can be characterized characterized by the following motions. See, the we have a three types of the motion basically. Each and every one I will need to write here. Okay, each and everyone need to write here. So this first one is the slowly convergent. Okay, a slowly convergent or divergent motion, slowly convergent or divergent motion, called the spiral mode. Number one. Number two, slowly convergent or divergent motion we will have, then this will be called as a spiral mode. Okay, a highly convergent, single marks question will be asked, so please remember, a highly convergent motion called the rolling mode. The rolling mode. This is the second one. And third one we have a lightly damped. Third one, a lightly damped oscillatory motion. Oscillatory motion having low frequency. Okay, having a, listen carefully, having low frequency. If low frequency means time period will be high. Okay, low frequency called the Dutch roll mode. Okay, so what is the important point? The important point is very simple. Three types of motion you need to remember in case of the lateral directional uh, uh, motion. So three type of motion is nothing but, see, number one we have a spiral mode, number two we have a only rolling mode, and number three is nothing but Dutch roll. Okay, so it's spiral mode, rolling mode, and Dutch roll mode. You need to remember this. Okay, all three question will be asked. So this spiral question will be asked. Maybe it is convergent, or maybe it is divergent. Maybe it is convergent, or maybe it is divergent, but slowly. Okay, convergent or divergent, but must be it's very slow.
very slow motion we will have, and it doesn't mean it's convergent or divergent. Okay, you always remember this. This question will be asked to you. And this one, it is the highly convergent. Okay, it's a highly convergent. Only convergent will be there here. No divergent motion. Highly convergent. Among all three, only one is the oscillatory motion. That is also very important. Question will be asked to you. Okay, so only one motion will be called oscillatory motion, and this oscillatory is a combination of yawing and rolling. Okay, so this is the oscillatory motion. They will give the different all three names: uh, divergent, directional divergent. Okay, then spiral divergent they can give, and they can give the Dutch rule. So they will ask which one is the oscillatory motion. So only Dutch rule is the oscillatory motion. These two, okay, these two are not the oscillatory motion. Number one, this you need to remember. This you need to remember. And even though for the Dutch rule, whatever the oscillatory motion you have, we have to focus on this. It is very important. It is very true. This is the oscillatory motion. This is the oscillatory motion. Okay, oscillatory motion. But always remember, this oscillatory motion is what? Combination of both. Combination of combination of yaw, yaw and yaw and roll oscillation. Always remember, yaw and roll oscillation, or yawing and rolling oscillation will be there. And very important for this Dutch rule is, this is also very important. They will ask to you that the frequency will be very less. Okay, frequency will be very very low. Okay, and they also can ask, because it's a oscillatory motion, so they also can ask Dutch roll is the damped oscillatory motion or undamped oscillatory motion. That also very important. So always remember, the Dutch rule is uh, here I will write, Dutch rule is damped oscillatory motion. Oscillatory motion. Okay, always remember motion. So these points you need to remember basically for the Dutch rule. They will give the motion. They will give the motion, and they will ask which one is the oscillatory motion. They will give the divergent, spiral divergent, Dutch rule. So you have to answer for the Dutch rule is the oscillatory motion. That you need to remember. This is the one thing. Second thing, which is very important, like if you talk about the roots. Okay, if you talk about the roots, so obviously here also you will have a pair of roots. Okay, doesn't means it is uh, like a complex root or a real and imaginary value, but here also the pair of roots we will have. Based on that we have to check the motion. Okay, so that is very important. And we, just like we had solved the previous problem for the longitudinal dynamic stability, so always roots will be given to you. Don't worry, don't bother about it, because it will be given to you. It will be given to you. Okay, they will not ask to calculate that value, right? So now if you talk about the types of mode based on roots, so you just listen. Okay, based on the roots, what we have, the obviously here also eigenvalue will be given, just like in the longitudinal dynamic stability you have seen. So eigenvalue corresponding to the lateral motion of a typical airplane contains two distinct real root, two distinct
real root, okay, and one complex pair, one complex pair, and two identical zero roots, and two identical zero. How many roots now total? Total we have a four roots. Why four roots you will have now? Because if you see the routes criteria, okay, total four roots you have, four roots, okay. So now coming to this, based on this analysis, the purely real and distinct root correspond to non-oscillatory modes. Okay, that is maybe it is roll, because what are the non-oscillatory motion here? Three motion I told you. What is the non-oscillatory? These two, maybe spiral mode or rolling mode. These are two are the non-oscillatory. Only one is the oscillatory. So now listen carefully. Okay, now listen carefully. So among these roots, you have to check what type of motion we have. So I must write, so this point note point you have to write the purely real and distinct root. Distinct roots corresponding, okay, corresponding corresponding or corresponds to two non-oscillatory modes. Okay, oscillatory modes. What are two non-oscillatory modes? Here you can say A, which is nothing but a roll mode here, just roll modes. And what is the B? Spiral mode. Listen carefully, it is very easy and very easy to remember also. See, two non-oscillatory mode I have told you. This is number one and this is number two. These two are the non-oscillatory mode. Okay, means there is no oscillation. So if you see the basically condition, I told you two distinct real root we have. Two distinct real root we have, and if you talk about the purely real and distinct root, okay, here purely real and distinct roots correspond to two non-oscillatory motion, that is roll and spiral modes. If this first one will come, two is distinct real roots, suppose you are getting, okay, that time that two non-oscillatory motion you may have, one is roll mode, another is spiral mode. That you need to remember. Okay, again you will have a confusion, which one is roll mode and which one is the spiral mode. So again you have to write, because you got the roots here. Okay, you are talking about the purely real and distinct roots. Now you got, it is decided like, okay, if real and distinct roots you are getting, then it is confirmed it is now non-oscillatory modes. And in non-oscillatory modes, two mode you have, roll mode and spiral mode. So first it will be clear, if two distinct real root you are getting, it is clear now non-oscillatory. But in non-oscillatory also two mode you have. So how to say this one is roll mode and this one is spiral mode? For that you need to write here. For that you need to write uh, note 2. What is the second point for the notes? So second point is nothing but the larger eigenvalue. The larger eigenvalues eigenvalue correspond to highly damped motion, highly damped motion known as roll mode. Okay, known as roll mode. Okay, this is very important.
known as roll mode. So whatever the eigenvalue you will get, so the highly damped motion, when you will see the larger eigenvalue, okay, larger eigenvalue will give the roll mode. Similarly, we have a third point. Similarly, we have a third point, which is nothing but the smaller, smaller eigenvalue value corresponds to corresponds to lightly damped, lightly damped or divergent motion, lightly damped or divergent motion called the spiral mode. Okay, now it is very clear. So these are the roots I told you. Two distinct real root. If you are getting, then it is confirmed. It is nothing but non-oscillatory motion. Now, once it is confirmed, it is non-oscillatory motion. Then again, we have a two types: roll mode and spiral mode. So in that real roots, in that roots or in that is also called eigenvalue. In that you have to check which one is the larger value. So that larger value will be highly damped motion, which is known roll mode. Similarly, the smaller value will be the uh, lightly damped or divergent motion, and that will be called spiral mode. Right? This is very important. You need to remember. Done. Now this all about what you have written. This was for the roll mode and spiral mode. Roll mode and spiral mode. What you have written, it was for roll mode and spiral mode. Now coming to the next, uh, this route is what done now. Now we'll go for the second one. So for that, what is the another mode? That mode is nothing but Dutch roll mode. Okay, this one is Dutch roll mode. We have to check for this Dutch roll mode. For this Dutch roll mode, basically complex pair you will have. What is the second one? See, one complex pair, na complex pair. So if you are getting complex pair, so how the complex pair will be? I have already shown you in case of the longitudinal dynamic stability. So similar complex p plus minus iq, that is the complex pair, right? So if now the complex pair, the complex pair, okay, describe describes describes the oscillatory motion called called Dutch roll. Dutch roll. Okay. What will be the in format? So format will be what? I told you the complex pair will be something like this: P plus minus IQ. Or this is the complex pair. This is the complex pair P plus IQ. P will be real and Q will be imaginary value. Or this also you can write in this format as I had given: Xi omega n plus minus I, that is real part, and it's 1 minus Xi square into omega n. This will be the format, just like in longitudinal dynamic stability I have shown. Because if you see longitudinal dynamic stability, there was the phygoid motion. So phygoid motion was what? It was oscillatory motion, yes or no? So, so for oscillatory motion, obviously the pattern will be same. And you know this Dutch roll also oscillatory motion. For that reason, we are getting the same same
pattern of the equation you are getting. Okay, so xi omega n, xi you know it is damping ratio, omega n is natural frequency in radian per second. 1 minus xi square omega n is called damping frequency omega d. Yes or no? This 1 minus chi square omega n, this is nothing but omega d, which is nothing but damping frequency. All right, so this is for the Dutch rule. Now what is the another roots? That is two identical zero roots. Now if you are getting the zero roots, then what is the mean of it? Okay, so if there is the zero root, so simple, that meaning is what the, it's a displacement of the body. It's behave like a rigid body displacements. So you need to write this. This is called rigid body. Sorry, this is called rigid body mode. Okay, this is called rigid body mode. So what is the rigid body mode? In this, it will not perform any spiral mode, or it will not perform any roll mode. It will not perform any Dutch roll mode. It will be the a rigid body, which it will be a displacement, actually the rigid body displacement basically. So it is not going to call oscillatory mode or non-oscillatory mode. Okay, because it will behave like a rigid body mode, because once plane is what flying, then it is considered as a rigid body, right? So this this third one, if you check the point about the roots, what are the roots? Two identical roots, two identical zero roots. So once you are getting two identical zero roots, so these two zero roots, I must write here two zero roots. Okay, two zero roots or eigenvalue. I told you roots is nothing but eigenvalue correspond to correspond to correspond to rigid body displacement. Question will be asked. Okay, in even I in test also I will ask question in test. If for the lateral directional characteristics equation, two identical zero roots are there, then what type of the mode will be performed by the plane, or what type of the mode will be there? Option will be roll mode, spiral mode, Dutch roll mode, okay, rigid body mode. So answer will be rigid body mode. If question again, for the lateral directional characteristics equation, if complex pair roots or complex pair eigenvalues are there, then what type of the mode will be there? Okay, option Dutch roll mode, Dutch roll mode, spiral mode, rigid body mode. So Dutch roll mode. So this type of single marks question can be asked in different way. They can give the statement, but the meaning will be same throughout what I have explained. This is very important. You need to remember. Till now, very rarely they have asked from the lateral and directional dynamic stability. As I told you, many times question they had asked from the longitudinal dynamic stability. So that I have nicely solved the characteristics equation and explained nicely. But theory part I am giving to you. I believe that if question will be asked to you, so roots will be given to you, just like in case of the what it is in case of longitudinal dynamic stability we had seen. So roots will be given there, and from the roots you have to check which one is the larger eigenvalue, which one is the smaller eigenvalue. If eigenvalue means roots, if roots are roots larger and smaller, you have to check. If it is a larger root, then it will be called roll mode. If it is a smaller root, then it will be called as a spiral mode. And if you are getting complex roots or complex pair roots, then I have to write the complex pair eigenvalue. Sorry, here I have to write the eigenvalue. Describe the oscillatory motion. If complex pair
eigenvalue will come, then automatically you have to understand this is the oscillatory motion, this is the Dutch roll. Simple, it's very simple actually. I believe that everybody understood this. Yes or no? It is clear to all? हाँ सर, क्लियर सर। हाँ, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. ओके, इट्स वेरी सिंपल. And question once they will ask, then you have to answer for it. Okay, like highly convergent called rolling mode, slowly convergent or divergent spiral mode. Okay, damped oscillation called Dutch roll. This type, all the statement point of view you need to remember every time. Okay, here I have written all three. This is also because everything whatever I have written here, it is related to your question exam, and I will ask question from this point also. I'll give right. Okay, a slowly convergent or divergent motion called spiral mode, roll mode, Dutch roll mode, a rigid body mode. You have to answer. Highly convergent motion called rolling mode, spiral mode, Dutch roll mode. So this all the statements you have to remember here. Now this part is done. Still in the role, I told you stability is very lengthy, but whatever required for your the syllabus, I tried my level best to complete that. But still, if something will solve the question paper also. If something will come, new thing will come, then again don't worry, I will be in the standby mode always. Whenever anything is what missing and you are solving question paper and anything is coming new, then you can ask, then again I will explain you. Okay, now this part is done. Now you tell me what next subject I have to start. And nothing to worry about mathematics. I have faculty I'm discussing also, but due to some reason, sometimes it is because of the, I'm just finding the best one. So best one for the students, best one for the institute also, because it's a long time process. So I'm talking 2 3 faculties are available. So I'm talking them, and very soon we'll start mathematics. So that is my headache. I'm trying as soon as possible to start this. Anyway, actually, truly, I'm speaking in 2 colleges. My webinar is what going to conduct in next week. So I'm thinking, okay, one more week. Let's wait, because if new student will come, then again math faculty will not teach. They will give only first one time only. They will teach. For that reason, I'm also just like waiting for at least one more week. Otherwise, after 1 week, I will start mathematics. That is also one more reason. Anyway, you tell me about the core subject. What another next new subject you want to start? हितेश, किया क्या? हितेश, आर यू हाँ देयर? हो सर। हाँ, प्रो. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? इम्तियाज, प्रज्वलिका, यू गाइस टेल मी. सर एरोडायनेमिक्स सर मेरा तो। ठीक है, एरोडायनामिक. एंड व्हाट अबाउट प्रज्वलिका टू यू? Sir, I was thinking aircraft structures, aerospace structures. Aircraft structure, aerospace structure. Okay, so only Hitesh can decide voting. One, two members said other different subject. What is the vote for the Hitesh? Hitesh, what you want? He will say another new subject. मेरे को भी वही लगा सर। पर एरोडायनेमिक्स बहुत लंबी होगा ना सर? हाँ, एरोडायनेमिक्स डियर लेंदी है. एंड इसमें 2 पार्ट है, इनकम्प्रेसिबल एंड हाँ सर, कंप्रेसिबल है. कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल। थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन इंटरेस्टेड है. तो इफ यू से हाँ विल सर। स्टार्ट दैट आल्सो. हाँ सर, जल्दी भी हो जाएगा सर, लेंदी सी है पर फिर स्ट्रक्चर भी। बहुत ज्यादा, ऐसे तो सेमेस्टर में बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेंदी है, ठीक है. बट हाँ सर। आपको गेट में फुल स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली, बिकॉज स्ट्रक्चर इफ यू टॉक इन आवर सेमेस्टर, देन 2 पार्ट इज देयर. स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, है कि नहीं? तो full structure is very lengthy actually. So for gate aerospace, structure is pinpointed. Few topics they have taken from structure part 2, and few topics they have taken from structure part 1. Okay, so very pinpointed syllabus we have in structure. So don't worry, structure is simple only. SMD BMD हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, कॉलम हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, एंड टॉर्सन हो गया. बस यही तो टॉपिक है.
भाई SFD BMD, व्हाट इज द टॉपिक इफ यू रिमेंबर? अपने को जो गेट में सिलेबस है वो यही है। वेट, हाँ, गेट जो सिलेबस है वो एक तो बेसिक सोम है जो कि आपको बता दिया जाएगा, बेसिक एमओएस, एमओएस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ही बात है। एक तो बेसिक ये रहेगा, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे हुक्स लॉ क्या है, और ये इलांगेशन, डिफॉर्मेशन, फॉर्मूला, वो तो 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाता है, या और कहोगे तो 4-5 लेक्चर पढ़ा दूंगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें सीजी वगैरह फाइंड करना, मोमेंट ऑफ एनर्जी, एक्चुअली दैट्स नॉट पार्ट ऑफ गेट, बट बेसिक यू नीड, बेसिक तो पता होगा। अगर पता ही नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, सीजी कैसे निकालेंगे, तो फिर काम कैसे होगा, है ना। डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन कैसे निकालेंगे किसी बॉडी का सब्जेक्टेड टू द लोड्स, देन कैसे निकालेंगे, इफ यू नो दैट देन इट विल बी इजी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड में पकड़ लेते हैं अपन SFD और BMD है, वो भी इतना ये डिटेल में नहीं है, बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपको मैं बहुत ट्रिक, एक सटीक ट्रिक बता दूंगा जिसमें आप फटाफट कर ले जाओगे। 70 BMD वो भी बहुत छोटा ही है, डोंट वरी। ऐसे तो सेमेस्टर में जाओगे तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, बट गेट में बहुत रेयर पूछता है। लेकिन आई विल टेल यू द ट्रिक्स, लाइक आफ्टर सीइंग द बीम हाउ टू ड्रॉ द SFD, हाउ टू ड्रॉ द BMD, मैं उसमें मास्टर बना दूंगा आपको। तो वो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आप देख के बता सकते हो बीम में कि दिस इज द SFD फॉर दिस बीम एंड दिस इज द BMD फॉर दिस बीम। बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक बीम दिया रहेगा, बीम में आपको यूडीएल दे दिया और पॉइंट लोड दे दिया, सपोज 10 kN एंड दिस इज 2 N/मीटर, और उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेगा कि एक तो इसका क्या बोलते हैं, मैंने एस एफ डी की आपको 4 ऑप्शन रहेगा, कुछ भी बना के दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एंड दे विल से ओके विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द SFD। ऐसे क्वेश्चन आते हैं SFD BMD, तो बहुत सिंपल है। आई विल ट्रेंड यू, एंड वंस यू सी द बीम देन ऑटोमेटिकली यू फाइंड द करेक्ट आंसर, तो वो तो आसान है, उसके लिए टेंशन नहीं। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन विच इज इंपॉर्टेंट, डिफ्लेक्शन से पूछता है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। एंड फोर्थ वन इज द कॉलम, पेट क्वेश्चन है, आना आना तय है। एंड फिफ्थ इज द टॉर्शन, उस टॉर्शन के अंदर ही आपको सीयर सेंटर बताया जाएगा, जो कि सीयर सेंटर पूछता है हर दूसरे तीसरे साल में एक बार, सीयर सेंटर पूछता है, मीन्स फ्रिक्वेंटली दे आर आस्किंग सीयर सेंटर। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वाइब्रेशन। खत्म, बस इतना ही है स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं है, तो डोंट वरी। स्ट्रक्चर इज, ऐसे सोचोगे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो इट्स वेरी लेंदी सब्जेक्ट एंड वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट, but in gate pinpointed topic they have given, so we have to talk about that only, number one। number two, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी कि स्ट्रक्चर में आपको शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई थिंक बिकॉज एरोडायनेमिक्स इट्स द बिगेस्ट सब्जेक्ट, बिकॉज 2 पार्ट्स इन एरोडायनेमिक्स वी हैव ना। एरोडायनेमिक्स, यही तो प्रॉब्लम है कि इसमें 2 पार्ट बना रखा है एरोडायनेमिक्स। दिस इज द व्हाट इट इज कॉल्ड, इनकम्प्रेसिबल एरोडायनेमिक्स, एंड दिस इज व्हाट कंप्रेशन। तो कंप्रेसिबल भी बहुत बड़ा सा पार्ट है, इसके अंदर अपन 1D इक्वेशन पढ़ेंगे, CD नोजल पढ़ेंगे, देन शॉक पढ़ेंगे। आजकल तो फैनो एंड रेले फ्लो के क्वेश्चन भी आने लग गए, फैनो एंड रेले, लास्ट टाइम आया था रेले फ्लो का। तो ये है कंप्रेसिबल। एंड इन इनकम्प्रेसिबल यू नो वेरी वेल दैट कैनेमेटिक्स, द फुल टॉपिक, कैनेमेटिक्स, देन बाउंड्री लेयर थ्योरी, देन पाइप फ्लो से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बाउंड्री लेयर थ्योरी इटसेल्फ अ वेरी बिग है, तो इट्स वेरी लेंदी एक्चुअली। तो एंड हाँ, अभी इसको कैसे भूल गए। फिर इनकम्प्रेसिबल तीसरी इनकम्प्रेसिबल में अपन पकड़ लेते हैं ये, दिस इज द फाइनाइट विंग थ्योरी, वेरी लेंदी, वेरी लेंदी नहीं बट इंपॉर्टेंट, फाइनाइट विंग थ्योरी, ओके, जिसमें आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्टाइसेस, लाइक हॉर्सशू वर्टेक्स, स्टार्टिंग वर्टेक्स ना, वो सारे डाउन वॉश का कंसेप्ट, ये सारे फाइनाइट विंग में पढ़ोगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिन एयरफॉल थ्योरी, थिन एयरफॉल थ्योरी, दिस इज ऑल्सो वेरी, थिन एयरफॉल, इसमें आप फाइनाइट विंग में आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली पढ़ोगे प्रैंडल लिफ्टिंग लाइन थ्योरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एरोडायनेमिक्स में बहुत कुछ है पढ़ने को। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको लास्ट में पढ़ोगे तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ाना होगा, बेटर है कि आप अभी पढ़ लो, एंड वी हैव इनफ टाइम, डोंट वरी, आवर सिलेबस इज व्हाट गोइंग गुड, we have finished separately, if you talk then 2 subject I have finished, okay, 2 subject I have finished, number one performance,
itself a very lengthy subject. Number two is the stability. Both subject, if you check, it's containing 8 to 10 marks, even more than also sometimes 14 marks. इससे इतना इसका वेटेज है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट था जो कि आपने खत्म किया है। तो बैक टू बैक आई हैव टॉट यू, एक्चुअली इट्स अ टू सब्जेक्ट, परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। ओके, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, बट दिस इज टू सब्जेक्ट, टू डिफरेंट सब्जेक्ट। टू पार्ट्स आई हैव डन। अभी आई थिंक वी शुड गो फॉर द एरोडायनेमिक्स बिकॉज इट्स अ लेंदी वन। एरोडायनेमिक्स हो गया। देन प्रपल्सन इज वेरी स्मॉल, प्रपल्सन बहुत छोटा है, ठीक है। प्रपल्सन में क्या है, प्रपल्शन बहुत छोटा है। इसके अंदर तीन पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया जेट प्रपल्शन, एक हो गया रॉकेट, एक हो गया टर्बो मशीन। टर्बो मशीन में अपन क्या पढ़ लेंगे, कंप्रेशर एंड टरबाइन ना, कंप्रेशर एंड टरबाइन। तो ये भी बहुत छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, कंप्रेशर एंड टरबाइन। एंड जेट में बस सारे सारे इंजन को पढ़ना है, बट क्वेश्चन हमेशा जो पूछता है वो रैम जेट से ही पूछता है और टर्बो जेट से। तो लेकिन आप सारे पढ़ोगे, टर्बो जेट, रैम जेट, टर्बो प्रॉप, टर्बो फैन, सारे पढ़ोगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रपल्शन। तो बचा क्या, प्रपल्शन इज डन, है ना, मतलब ये होगा इसका सिलेबस। एंड देन परफॉर्मेंस तो हो ही गया, ठीक है। एरोडायनेमिक्स आपको, स्ट्रक्चर हाँ और स्पेस डायनामिक्स। हाँ, नहीं ठीक है, मैं मेन मेन सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। ये दिस इज द स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, यस यस, आई विल टेल यू। स्ट्रक्चर हो गया एक ये इधर, ठीक है, स्ट्रक्चर। देन दिस इज द एरोडायनेमिक सेकंड, दिस पार्ट इज डन ऑलरेडी, है ना। एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। एंड जो बच रहा है वो स्पेस डायनामिक्स। डोंट वरी, स्पेस डायनामिक्स आई विल टीच। वैसे इसका वेटेज बहुत कम है, 2 to 4 मार्क्स ही है, बट लेकिन अपन पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, अच्छा सब्जेक्ट है ये। बस कुछ नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नाउ अगस्त गोइंग ऑन। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी फर्स्ट वीक है आपका सिलेबस जो खत्म होगा, दिसंबर 31 तक खत्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा मैंने डाउट सेशन और ये सब चलता रहेगा तो जनवरी 15 तक जाएगा, लेकिन कोशिश ये होता है कि दिसंबर तक खत्म कर देंगे, दिसंबर 31। तो दिस इन इन दिस क्या चल रहा है, अगस्त खत्म हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, 4 मंथ आई हैव, एंड 4 मेन सब्जेक्ट्स वी हैव। अभी अपने को 4 महीने हैं, ठीक है, 4 मंथ। सब्जेक्ट कितने मैंने बताए, मेन सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट्स वी हैव ना, 1 2। मैथ का आपका एक्स्ट्रा चलेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर लगेंगे, डोंट वरी, उसको मिक्स नहीं करना है। स्ट्रक्चर 1 2 3 4। तो टेंशन क्या है, अभी अब एक सब्जेक्ट तो खत्म ही कर चुके, 3 तो निकल ही गए, तीसरा नंबर निकल गया आपके पास। जो बचा है वो स्ट्रक्चर बचा है मेन, एरोडायनेमिक्स बचा है, एंड देन प्रपल्शन। तो 3 सब्जेक्ट है, और वो स्पेस डायनेमिक्स है। तो अपने को 4 महीने मिल रहे हैं, मोर देन इनफ है। आपको सिर्फ करना ये है, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी नाउ। अब कुछ ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम। अभी क्या है, इफ यू डू हार्ड राइट नाउ, डू हार्ड वर्क राइट नाउ, तो लास्ट में क्या है, पैनिक नहीं होगे, बिकॉज लास्ट में पैनिक होकर के फिर हम अगर हम 16 आवर भी पढ़ेंगे ना, तो वो किसी काम का नहीं। बट अगर हमने 6 आवर भी पढ़ लिया ना ढंग से, तो ये काम के हैं, बिकॉज नाउ विदाउट टेंशन यू विल डू द वर्क, देन यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली। बट लास्ट मोमेंट में अगर 10 16 15 आवर्स पढ़ोगे तो वो किसी काम का रहेगा नहीं, किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि अभी से थोड़ा प्रैक्टिस बनाओ, 6 to 8 आवर्स गेट पढ़ने के लिए, एटलीस्ट 6 आवर तो पढ़ो पूरे 24 घंटे में। 24 आवर्स में 6 आवर पढ़ सकते हो गेट, यू विल गेट टाइम। अरे 1 घंटे मेरे पास ही पढ़ ले रहे हो, 5 आवर्स बचे, 5 आवर्स में 2 घंटे अपना रात को निकाल लो, कुछ 1 2 घंटे दो दिन दिन में निकाल लो, इसी तरह से बैलेंस करके 5 6 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दो। दोज हु आर वर्किंग, अदरवाइज जिसका पढ़ना ही है तो यू हैव टू स्टडी ऑल टाइम इफ यू वांट गुड रैंक, एंड यू विल गेट दैट, डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल ओनली। क्लियर है ना। हाँ सर। हाँ, सो यू आर गोइंग ऑन टाइम, कुछ अभी टेंशन नहीं लेने का कि सब्जेक्ट खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, आपको मैंने दिखा दिया। अगर प्रपल्सन एरोडायनेमिक्स अगर स्ट्रक्चर को हम एक एक महीना भी पढ़े तो भी बहुत हुआ पढ़ने के लिए, और डोंट वरी, प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम कब स्टार्ट किए थे हितेश, क्लास कब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक जुलाई में स्टार्ट हुआ है, कब हुआ है स्टार्ट, हाँ
सर इम्तियाज, जून में हो गया सर। इम्तियाज when classes has been started? सर शायद जून में हुआ था सर। में हुआ था सर। जून में हुआ था ना, तो जून जुलाई अगस्त, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, जून में तो शुरुआत जून जून से तो नहीं हुआ होगा, मतलब फर्स्ट वीक से हुआ था क्या? नहीं सर, नहीं सर। कोई बात नहीं। एंड डोंट वरी, अभी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मटेरियल किधर है, वीडियो किधर है, सब कुछ उस पे आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है, एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, माने आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर उस डैशबोर्ड पे आपके सारे डिटेल्स होंगे, वहां से जो चाहोगे वो मिल जाएगा। आप वीडियो लेक्चर जाओगे तो वीडियो लेक्चर मिलेगा, सब हाँ कुछ सर, जाओगे। हाँ? चल हुआ है अप्रैल 30। कब से? अप्रैल 30। हाँ, हाँ सर। अप्रैल 30 मतलब पकड़ लो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, काफी समय से पढ़ रहे हैं ना, 3 साढ़े 3 महीना में। आपने 24 का ग्रुप फॉर्म किया था सर, घेरो अड्डा वाला। चलो, 24 अप्रैल। कोई नहीं, तो ठीक है। अब थोड़ा सा और स्पीड अप होगा, अभी तो मान लो स्लो चले थे, और स्पीड अप होगा, विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लेक्चर आल्सो इफ इट इज रिक्वायर्ड। कोई नहीं, सो ऑनवर्ड नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट एरोडायनेमिक्स, ठीक है। ओके सर। ओके देयर, ओके ओके, थैंक यू ऑल, ठीक है। So I had problem in structures only in college, so that's why I said structures. कौन पढ़ाया था स्ट्रक्चर? Structures, Vijay sir. Then for राहुल सर, some time it was Manikandan sir. Yeah. मणिकंदन सर, ओ माय गॉड, ठीक है, दे टॉट वेल, बट इट वाज सेमेस्टर, डोंट वरी, दिस इज Yes. फॉर गेट, तो ऐसा आपको टेंशन होगा नहीं। एंड इफ यू फेस मच मोर प्रॉब्लम देन this subject is what going to be easiest subject for you now, okay? So Okay, sir. so don't worry, your work is what I'm teaching you, just revise nicely, okay? And Yes. keep searching good book related to that topic, because you have enough time to read the book also. Later on, Hmm. बाद में तो बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, that time you have to follow my notes only. Otherwise, right now you have time, so you can go for the book also, different book you can read, and you can make your own notes also, because enough time you have, so you can do that, okay? Yes, sir. All right. Sir, for aircraft stability, you didn't give that question. Means, Like for performance, you gave us a set of questions, some 20 questions, and asked us to practice. हाँ, so For आप yes, stability also will give. Once I will start another subject, then question I will give for the stability, and you have to practice for the test, right? We'll give that. Don't worry. yes. Okay. Okay, sir. Thank Okay. you.